Okay, so we are going to start today's class with day one. We will highlight it. So during the class, I will also be mentioning you shortcut keys. So try to remember that, because if you will start using the shortcut keys, it will be much easier for you to work without using your mouse. Ultimate target is not to use mouse. जब भी आप सिस्टम पे काम कर रहे हैं, हमें माउस यूज नहीं करना है. केवल हम ट्राई करेंगे. ओके, सो हमने यहाँ से कॉपी किया. नेविगेशन भी हम यहीं से करेंगे. ओके, सो व्हाट वी डिड इज we went on today by navigating through these 4 keys, up, down and left, right. Now I will click shift plus control and then down arrow. Yes, now it has been copied. Okay, now we will see some basic functions today. These are today, now, then by, row, column, rand. We'll go on a new tab. Again, paste it. These functions are known as functions who are not having any reference. So these 6 functions, they do not have any reference. Why I'm saying so? These functions, in every function, if you have used, you put an equal to symbol before starting any formula or function. Then you put the formula to d today. Now you see here, we will start the parenthesis, and then there is nothing it is asking. It's just a simple function. Okay. हमने यहाँ पे कोई इनपुट नहीं दिया उसको. ठीक है, हमने ब्रैकेट के अंदर में जब हमारे पास कोई इनपुट नहीं होता तो उसे हम कहते हैं कि कोई रेफरेंस नहीं है. ब्रैकेट में जब भी हम कुछ उसको इनपुट देंगे तो उसका मतलब होगा कि हम उसे रेफरेंस दे रहे हैं. ठीक है. अब सिमिलरली हमारे और भी बाकी फंक्शंस ऐसे हैं, जैसे इक्वल्स टू हमने यूज किया, देन वी विल पुट नाउ, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज. तो व्हाट आर टू डिफरेंसेस? इसके अंदर में आपको टाइम मिल रहा है एंड इसमें सिर्फ डेट था. टुडे में यू विल गेट ओनली डेट. व्हेन यू यूज नाउ तो यू विल गेट अ टाइम आल्सो. ठीक है. सिमिलरली पाई इज अ मैथमेटिकल फंक्शन. तो इसमें भी अब सिमिलर आपको बस पैरेंथेसिस देना है एंड चेंज. अच्छा, ये देखो, जब भी हमने यहाँ पे कुछ इनपुट डाला तो यहाँ पे ये चेंज होगा, रिफ्रेश हो गया, ऑटो रिफ्रेश. एंड ये जो डेट एंड टाइम है एग्जैक्टली उसी टाइम को बताएगा. नाउ अनदर फंक्शन इज अ रो फंक्शन. तो हियर वी यूज अ रो फंक्शन विदाउट एनी पैरेंथेसिस में हमने कोई रेफरेंस नहीं दिया. तो इट विल टेल एग्जैक्टली इन विच रो इट इज. ये फंक्शन हम क्यों पढ़ रहे हैं बेसिक? क्योंकि जब आप फॉर्मूलाज बनाओगे उस टाइम पे हम फॉर्मूला में यूज करेंगे ये फंक्शंस को. रो फंक्शन यूज करेंगे, कॉलम यूज करेंगे, तब ये याद होना. अगर याद होगा तो आप इजीली क्विकली उसको डाल सकते हो. सिमिलरली कॉलम फंक्शन हमें क्या बताता है कि ये कौन से कॉलम में है. ठीक है. कॉलम फंक्शन से हमें बताया कि ये थर्ड कॉलम है, यहाँ से ए बी सी इज अ थर्ड कॉलम. सिमिलरली रो वाज 5th नंबर पे, तो ही गिव अस 5th आंसर. अच्छा, ये भी याद रखना है हमें कि एग्जैक्टली हमें वैल्यू में क्या देता है वो. जब आउटपुट आपका आ रहा है तो आउटपुट में हमें नंबर देता है. आपने रो लगाया, नंबर दिया, कॉलम लगा रहा है, नंबर दे रहा है. ठीक है. सिमिलरली देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड रैंड फंक्शन. रैंड फंक्शन गिव्स यू अ रैंडम वैल्यू बिटवीन 0 to 1. ठीक है. सो अब जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले अपना फंक्शन लिखना है. उस फंक्शन के बाद में हमें उसका जो आपका सिंटेक्स है, तो सिंटेक्स लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले स्पेस दे देंगे. अदरवाइज आप डायरेक्टली लिखोगे तो वो फॉर्म लग जाएगा. तो स्पेस पहले ही दे देंगे और इक्वल्स टू हम डाल देंगे टुडे. सिमिलरली वी विल प्रैक्टिस
हाँ ओके। सो अब ये हमने फंक्शन का लिख दिया, देन हमारा से आपका जो उसका सिंबल है वो यूज कर रहे हैं, देन एक्चुअल फंक्शन हम यूज कर रहे हैं। नाउ हम उसका यूज केस लिखेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इट गिव्स यू। सो इट विल गिव टुडेज डेट। तो इस तरीके से आपको जो है ना प्रैक्टिस करना है इसको लिख के। जब आपको ये याद हो जाएगा ना, क्यों ये याद इसलिए करना है क्योंकि जब आप डेटा वैलिडेशन आप यूज करोगे, एंड जब आप डेटा वैलिडेशन और उसके बाद में आप जब कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये फंक्शंस आप जब यूज करोगे, उस टाइम पे आपका ये काम आएगा। क्योंकि यहाँ पे तो आपको हिंट मिल जाता है ना, जब भी आप कोई फंक्शन डाल रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने टुडे लिखा तो ये टुडे का आपको हिंट दे देगा। फॉर एग्जांपल आप वी लुकअप डाल रहे हो तो वी लुकअप का हिंट आपको देगा, लुकअप वैल्यू डालना है, फिर एरे डालना है, फिर कॉलम नंबर। तो ये इजी है हमारे लिए। बट जब आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड डेटा वैलिडेशन लगाते हो तो वहां पे वो हिंट ऑप्शन नहीं आता है। तो अगर आपको ये याद नहीं होगा तो वहां पे दिक्कत आएगी। तो ट्राई टू रिमेम्बर दीज। तो इस तरीके से आपको ये बनाना है। ये थे हमारे फंक्शंस विदाउट रेफरेंस। हम यहाँ पे लिख देते हैं। और ये सिर्फ 6 फंक्शंस ही होते हैं पूरे एक्सेल में। 6 ही फंक्शन ऐसे हैं जो रेफरेंस के बिना है। नाउ लेट अस मूव टू अनदर फंक्शन विच इज रैंड बिटवीन। अच्छा, तो रैंड बिटवीन में आप दो नंबर दे दोगे जिनके बीच का नंबर दिखोगे। करेक्ट। स्पेसिफिकली वो अभी बाय डिफॉल्ट वो 0 और 1 के बीच में दे रहा था। हाँ, तो रैंड बिटवीन में हमारा सिमिलरली है। ओके, इसमें बटन्स डिफरेंट है। हर लैपटॉप में आपका कुछ ना कुछ चेंज आएगा। सो हियर वी सी रैंड बिटवीन। हम फंक्शन देखते हैं। नाउ रैंड बिटवीन क्या करता है कि आपसे ना ये रेफरेंस मांगता है। ठीक है, तो या तो आप पूरा रैंड बिटवीन टाइप कर सकते हो या फिर आप नीचे आ गए एंड टैब आपने किया, आपका आ जाएगा। अब ये पहले बॉटम नंबर आपसे मांगता है, 0 to 1000 के बीच में आपको रैंडम नंबर चाहिए। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे आ जाते हो रैंड बिटवीन के आप पास में, तो ये तो इजी है कि हमें ये पता चल गया कि भाई आपको रैंडम नंबर देगा इनके बीच में। बट रैंड बिटवीन बहुत ज्यादा यूज होता है जब आपको डेटा क्रिएट करना है। व्हेन यू वांट कि आपके पास में एक रैंडम डेटा पूरा क्रिएट होके आए, तो उस टाइम पे रैंड एंड रैंड बिटवीन बहुत यूज होगा। फॉर एग्जांपल, अब मैं चाह रहा हूँ, मेरे पास एक डेटा है नहीं, मैं डेटा पे लेकिन वर्क करना चाहता हूँ, आई नीड सैलरी। तो व्हाट आई विल डू इज कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सैलरी के लिए रैंड बिटवीन यूज कर देंगे। ठीक है, ये हम रैंड बिटवीन यहाँ पे हमने यूज किया एंड हम सैलरी डाल देते हैं 10,000, फ्रॉम 10,000 to 50,000। हमने सैलरी डाल दिया। तो अब हमारे पास में जो भी XYZ नेम है, टोटल हमारे पास में 10 नेम्स हैं। तो हमने 10 लोगों का सैलरी यहाँ पे लिख दिया। सो ये सैलरी का हमारे पास में रैंडम नंबर आ चुका है। अब कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमें, फॉर एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चन दूं कि ठीक है मुझे रैंडम नंबर चाहिए, बट मैं चाहता हूँ कि इसके पास में डॉट्स में भी रैंडम नंबर्स आए। आफ्टर द होल नंबर्स आई वांट सम डेसिमल नंबर्स आल्सो। तो व्हाट आई विल डू इज कि आई विल यूज हियर, if I want to have numbers in decimals, so I will use rand function. So I will use simple rand function and I know कि rand में सिर्फ 0 to 1 के बीच में मिलेगा। तो I will put on this, मैंने ये लिख के डाल दिया। अब मुझे चाहिए कि ये दोनों मर्ज में हो। तो या तो मेरे पास सिंपल ऑप्शन ये है कि मैं दोनों को मर्ज कर दूं, अदरवाइज आई हैव टू डायरेक्टली पुट ऑन अ फॉर्मूला। और मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं डालूंगा रैंड बिटवीन। I'll put rand between 10,000 to 50,000 and then I'll plus rand. So here I will get a completely random value. Now this is known as a random data creation. So यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, randomly data को create कर रहे हैं।
using rand and rand between function. ठीक है, ये एक हमारा फंक्शन बड़ा काम का है। नाउ ये फॉर्मूलाज कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो हमने कई बार यूज किए हैं। ठीक है, काउंट भी यूज किया होगा, ऑल टुगेदर वो अलग से हम लेंगे। ये कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस वाले फंक्शन है जो कई बार यूज होते हैं। सो आपके पास में कोई भी रैंडम नंबर्स हैं, लेट्स से कि यहीं से ले लेते हैं हम कुछ नंबर्स को, सैलरी ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सैलरी ले लिया। अच्छा, अब इनकी जो वैल्यूज है ना, इस वैल्यूज को मैं फ्रीज कर देता हूँ। तो ये भी हम सीखेंगे कि जब हमने कोई फॉर्मूला डाला हुआ है तो उसकी वैल्यू को फ्रीज कैसे करना है, इसका क्लास में अलग से सिखाएंगे। अभी के लिए हम ये जान लेते हैं कि फ्रीज करने के लिए मैंने क्या किया, कि अभी इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है और जितनी बार हम ऑपरेशन करेंगे चेंज होगा। तो मैं क्या करूंगा, पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लिया मैंने, कंट्रोल C, कंट्रोल Shift V, ये सिर्फ वैल्यू आ गई अब। अच्छा, वो फॉर्मूला हट गया और उस पे जो वैल्यूज थी मेरी सिर्फ वैल्यूज पेस्ट हुई हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस करना स्टार्ट करेंगे। इसको यहाँ से ले लेते हैं। So now if I want to do a summation, simply I have to use sum function, and ये एक एक करके इनपुट मांग रहा है, एंड बेस्ट पार्ट इज कि हम इसको कंप्लीट इनपुट भी देंगे तो भी ये कर देगा। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं। अब हम जब ये यूज करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी हमने बहुत ज्यादा बेसिक्स में गए नहीं, अगली क्लास में हम मैं थोड़े से और बेसिक चीजें आपको बताऊंगा। अभी फ्रीज अनफ्रीज का हमें एक कॉन्सेप्ट आता है। तो उसमें क्या होगा कि आप जो है रोज एंड कॉलम्स को अगर फ्रीज नहीं करते हो और ड्रैग करते हो तो आपका इशू आता है। तो हम फ्रीज अनफ्रीज भी सीखेंगे। मैं जस्ट आपको दिखा देता हूँ, अगर इसमें फंक्शन F4 से आपका यहाँ पे होगा वर्क। ठीक है, आपने फंक्शन F4 क्लिक किया। हर लैपटॉप में अलग होता है, किसी में डायरेक्टली F4 काम करेगा, किसी में फंक्शन F4। तो यहाँ पे मैंने इसको फ्रीज कर दिया। ये वाला कॉन्सेप्ट हम आगे देखेंगे कि कैसे और क्यों करना है। अभी के लिए हमने ये इसका पूरा सम है। अगर मुझे इसको वेरीफाई करना है, सिंपली इस पे पूरा क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इट्स अ मैक्स फंक्शन को मैंने इनपुट दिया। अच्छा, हर बार मैं माउस ट्रैक पैड यूज कर रहा हूँ, आई डोंट वांट टू यूज इट, तो आई सिंपली यूज्ड मैक्स, देन parenthesis starts, I'll go here, control shift and down, bracket close। मैं ब्रैकेट क्लोज भी नहीं करना चाहता, ऑटोमेटिकली इट विल टेक एन इनपुट। डन, equals to min, it will give the minimum value, then average, it will give an average value, then product will multiply every value, way too large value, so it has created this. Now these are the basic summation functions, mathematical functions. Now we will see here count A, count blank.
Okay. So what does count do? Count A and count blank. Let us take some numbers, random numbers. 12, then alphabet, then again a number, then space, blank, space. So this is the complete number. Let me just highlight it. Okay. So this is the array or a data. Now, here we can use the count function. Let us see what exactly it counts, how many numbers it keeps. It's giving you only two. First, count will only count the numbers. Okay. It will not consider any text values. Count A is for alphabet. Yeah, count A will consider everything. अच्छा, everything. हाँ. So see, now let us see कि ये count करता क्या है. Count A is showing only 2. इसमें आपने count लगाया. Okay. Okay. So now it is giving me 5, but 1, 2, 3, 4, and 5. 4 why? Because here I have given a space. Now what? Let us see count blank what it does, because it was a blank. There was nothing here. So count A will only count numbers, alphabets only, not spaces. Now count blank. Count blank will consider only the blank cells. No, only blank. Now count will only consider numerical values. Count A will consider numerical and text values or any special characters, even if you give, let us say, star. So it will count a star also. So if you even give a special character also, it will consider. Apart from blanks, count A will count everything. Number, text, special characters, it will count. Count blank will only count the blank cells. So it is very important when you are having a data, you want to check is there any blank. There are two ways, whether to put on some, whether you can put a filter, and in filter you will have a last option blanks. Or second thing what you can do is, if you want to know number of exactly blanks available, so you can put a count blank function on every column in the end. That time you will get to know how many blanks you have in a column.
Okay. So here we got to know how exactly count works. There are multiple functions in the count, but these counts will help you in most of the scenarios where you will be able to easily understand कि where count exactly you want to do. Now these are again rows and column function which we have seen here, but this time it is different. Okay. So these rows will tell you exactly how many rows in a data it is. So let us say, let us create some random data. Let's say Jan. Say some more. Okay. So now I want to understand. Okay. Now let us see here. Let me remove some more here. Okay. Now great. So I want to know how many rows are there in my data. When you're working on a big data, you need to know कि how many rows are there, or rows function is also used in between the formulas also. तो जब हम बड़े formulas बनाएंगे, जब complex वाले बनाएंगे, वहां पे हमें number of rows पता करना होगा, वो count करवाना होगा हमें उसको, तो ये वाला rows हमें वहां पे use में आएगा. तो यहाँ पे हम यूज करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना रो में और रोज में. रो था वो और ये वो रो था और उसमें हमने कोई इनपुट नहीं दिया था. अब ये रोज है, रोज में हमें इनको डेटा एरे देना पड़ेगा. ये मांग रहा है ना बीच में एरे, तो इसको अब को एरे यानी कि डेटा इसको देना पड़ेगा. अब ये बता देगा कि भाई टोटल कितने आपके रोज हैं. चेक भी कर लेंगे हम काउंट करके कि 10 ही है. सिमिलरली जो कॉलम्स वाला फंक्शन है हमारा, कॉलम फंक्शन भी हमारा बताएगा कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं. आप पूरा एरो सेलेक्ट करके इसको दे दो, ये बता देगा कि टोटल नंबर ऑफ किस किस में डेटा है. तो ये टोटल 3 कॉलम्स है जिसमें डेटा है ऑलरेडी अवेलेबल. तो दीज आर रोज एंड कॉलम्स फंक्शन. वेरी बेसिक तो है, बट बड़ा काम का चीज है. Okay, now let us take some names here. Multiple times you will see कि we will get a data like this. Let us take another. Okay, so now I want to do, I want to clean this data and in a proper manner. So suppose my bank, a bank is asking me for the data. Most of the time we have seen that banking data is in caps lock, completely caps lock. So upper function we will use here. Let वो पूरा caps में आ जाएगा. Let us take. So ये function हम सीखेंगे. Paste special, it will take a different class. So there are multiple things which you can do when you do paste special. So upper, when we use an upper function, so what will happen? It will convert the whole into an upper. So now you see clearly D2. I have mentioned D2 में value है हमारा. If I drag it down, ठीक है. So now every name is into a
completely upper बट इसमें case. तो आपने सिर्फ ये सेल को इसको input Correct. किया था ना So reference जब के लिए। हम उसको ड्रैग करते हैं, हम्म। what happens कि जैसे यहाँ पे अभी क्या है, आप आशीष पे जब क्लिक करोगे, डबल क्लिक करेंगे, आपको देखेगा D3, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरा क्या है D2, व्हेन आई ड्रैग वो ऑटोमेटिकली D कॉलम को स्टैटिक कर देता है, बिकॉज हम अच्छा। कॉलम चेंज नहीं कर रहे। अच्छा अच्छा एंड वो धीरे धीरे क्या करेगा, उसको नीचे ड्रैग करते हुए जाएगा, तो नंबर्स को चेंज करता जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा, देन 5 हो जाएगा, तो नंबर चेंज करता जाएगा। नाउ सिमिलरली लोअर फंक्शन में भी हम यही चीज करेंगे। हमने फंक्शन लिया, इसको पैरेंथेसिस हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, वी विल गिव इट एन इनपुट, डन। नाउ आवर नेम्स आर इन लोअर केसेस. Now I want in proper case. Proper cases means ki first word it will be capital, and then the second name it is having, then it is also will capital. So it was also known in English, it is known as a camel alphabet. And here we call it proper. तो अब इसको हम proper कर देते हैं. And we put proper, so it will give me good name in a proper format. In Neha Nagar, if you see, हाँ जी हाँ जी this is in proper. Second name भी आपका proper हो चुका है. तो these are the basic functions. So now we have covered 20 basic functions today. Okay. If you have any questions and doubts, and we will also see these functions later also. And let us save this file somewhere. Save in documents. Let us create a folder. हाँ, desktop पे create कर दो। That will be great. Okay. So these are the basic functions which we have covered today. Now, in the next class, we will see some more basic terminologies, and then we will be covering. We will start from Monday. The other tomorrow we have. Tomorrow we will cover some more basic things, and then from Monday we will cover some more formulas and functions. So revise these and try to revise these in this format. First, write name, then syntax. When you are doing practice at home, How it is written. how it is written, then execute, then execution, and then its explanation, what exactly it does. In this manner, you will, when you will have an habit, so in the end you will learn all the syntax, and without any thinking you will be able to do the data validation, and you will be able to do conditional formatting. Target is to get to a level where we can easily apply and to be fit as an analyst, as a BI analyst. So let's target that. हाँ जी हाँ जी हाँ जी। Okay. So we end the class here today.